नमस्कार फ्रेंड्स। सो आवर सेकंड एक्सरसाइज जो कि मैंने आपको दी थी ब्रिज रूल के ऊपर, तो मुझे उम्मीद है वो आपने सॉल्व की होगी। तो लेट अस सी द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द एक्सरसाइज ऑन ब्रिज रूल। तो पहला क्वेश्चन जो था वो था x+3 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 5/7। तो हाउ दिस कैन बी सॉल्व? तो इसको हम कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो व्हाट वी डू, न्यूमरेटर ऑफ वन साइड is multiplied completely with the denominator of the other side, likewise for the other set. So this 7 will be multiplied with x plus 3 and it will be equal to 5 into 6. So this will become, now this bracket can be opened by multiplying this 7 with the all terms of within the bracket. So it will become 7x plus 7 3s are 21 is equal to 5 6 30 is equal to 7x so when there is a equal to sign we can use this sign that is implies 7x is equal to 30. Now this 21 will go to the other side of the bridge and this 21 has positive sign, so positive sign, and with the remaining terms in this particular equation, so then it will go to the right side and with sign change minus 21. So that brings 7x equal to 30 minus 21 9. So now here this we have to take 7 to the other side. Now 7 has a relation of multiplication with the remaining terms in this. So this x will remain this side. When 7 goes to the other side, it will be divided to the whole terms to the right side. So answer is x is equal to 9/7 is the final answer. तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, the second question of this exercise. So now again we will do the cross multiplication and this will become 5. This will be multiplied by this 5 minus 2x is equal to 6 into 3. That means now 5 will be multiplied by the all the terms in the bracket. So 5 5s are 25 minus 5 2s are 10x is equal to 6 3s are 18. So now this 25 we have to take to the other side. So 25 has a plus sign 25 and with the remaining terms that is minus 10x. So now when it goes to the right side its sign will be changed from plus to minus. So minus of 10x is equal to, this minus sign is for 10x terms, so it remains with this. So minus of 10x is equal to 18 minus 25. So this is equal to minus 10x is equal to minus of 7. Now we have to take this can be written as minus 10 into x. So minus 10 can be taken to the other side and so that we can find x. So x will be equal to minus 7. This minus 10 is multiplied with x. So when it goes to the right side, जब right side में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये minus 10 नीचे आ जाएगा. Now आप देखिए हमने पढ़ा था डिवीजन रूल में, जब हमारा डिवीजन रूल में दोनों साइन या मल्टीप्लिकेशन रूल में दोनों साइन सेम होते हैं तो रिजल्ट इज पॉजिटिव. सो दैट मीन्स द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव. नाउ कोई कॉमन टर्म्स नहीं है, द फाइनल आंसर विल बी 7/10. तो तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो दिस विल नाउ बिकम, अगेन वी कैन डू cross multiplication. So this will become 4 into 5 is equal to minus 7 into
5x plus 3. So never forget to write the sign in front of any negative numbers. So that's what we have written, and when such numbers are multiplied, then we have to keep the negative numbers in bracket. So left side 4 5s are 20 is equal to, now this minus 7 will be multiplied with the all the terms, so it will become minus of 35x and minus 21. Now what we can do, we can bring this x term to the left side and this term to the right side, so that the variable terms comes to the left side of the bridge, that is equal to sign. So when this term, that is minus 35x, is brought to the left side, so it has, see, relation with this minus sign and with the rest of the terms. So then when this becomes is brought here, इस तरफ इसको जब लेकर के आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन प्लस का हो जाएगा 35x, सो इज इक्वल टू इधर माइनस 21 और ये जो है इधर केवल 20 है, तो यहाँ पर प्लस 20 है, यहाँ पे माइनस 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक ही स्टेप में हमने दो चीजें करी है। एक क्या किया हमने, इस माइनस 35x को राइट से लेफ्ट लेकर के आए हैं, तो यहाँ पर ये माइनस 35x था, having the same connectivity, same relation with the whole remaining terms in the relation, in the equation, and then हमने इसको यहाँ पे माइनस साइन का प्लस कर दिया। ये जो राइट साइड वाला 20 था, जब ये उधर जाएगा तो रिमेनिंग 0 है, तो 0 से ये 35 प्लस ऐड हो जाएगा, तो 0 वी कैन नॉट राइट, सो 35x ही रह जाएगा। अब ये क्या आ गया हमारा, सो 35x equal to minus 21 and minus 20, so this becomes minus of 41. Now this 35 multiplied by x, so x will be equal to minus of 41, ये मल्टीप्लाई है तो इधर आकर के ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो now I think there is no term which is common, so this becomes the final answer. So now the fourth question, let us solve fourth question. तो इसमें क्या है, again we will go for cross multiplication. So to the left side minus 3 into 2 is equal to 3 multiplied by 4 minus 5x. Now this will become minus 6 equal to, try to write in systematic manner so that r equal to sign comes just below the top line. So this will become 3 4s are 12 minus 3 5s are 15 x. तो अभी हम अगेन विल इन वन स्टेप इस 15x को इधर ले आएंगे, माइनस 6 को उधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा 15x इज इक्वल टू 12 प्लस 6, दैट मीन्स 15x इज इक्वल टू 18. अगेन दिस इज 15 इंटू x, सो x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 15, so 3 6 are 18 and 3 5s are 15. So final answer is 6 upon 5. तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं. So in this, to the left side in the numerator we have 4 plus 5. This can simply be, we can add 4 plus 5 means 9 upon 3 is equal to, before cross multiplication we can simplify up to it is possible. So now this will become 3 3s are 9, that means 3 upon 1 is equal to 6 minus x upon 8. So it is simplified. Now we can cross multiply. So 24 to the left side and equal to, so there is 1 it is multiplied with, so it remains 6 minus x.
So it is very easy. Now bring x to the left side. So x is equal to 6. Now 24 when goes to the right, so it will become minus 24. So now x is equal to minus of 18. This is the answer. So now we solve the sixth question. So in the sixth question we have, see, as I said earlier, जैसा मैंने पहले बताया कि before cross multiplication we can simplify. So the left side can be simplified. In the numerator and the denominator they have common factors 3, so these can be cancelled out. So it becomes 2x plus 5. So this is 1. Okay, na? Because when we are cancelling, so it will become 1 and it will become 1 is equal to 7 by 8. So now we can cross multiply. So to the left side, 8 into 2x plus 5 equal to 7 1 ja 7. Now open this bracket by multiplying 8 with all the terms. So it will become 8 to the 16x plus 8 5 are 40 is equal to 7. So in the next step, we'll take this 40 from left to the right side and this will become 7 minus 40. And in the next step, so this 16x now it is equal to 7 minus 40 means minus of 33. So x, now this 16 which is multiplied with x will be taken to the right side. इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस 33 अपॉन क्या आ जाएगा 16. So this is the, there is no possibility of cancelling the common factors. So answer is, so with this we have solved all the 6 questions of the exercise related to the bridge rule. तो ब्रिज रूल की जो हमारी पूरी एक्सरसाइज थी वो सोल्व कर ली है. तो आप इस वीडियो को एज यूजुअल लाइक करते रहिए और चैनल्स को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल्स को शेयर भी करें. और अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कस किया है अपने वीडियोस में, वो सारे वो वीडियोस थे जो बेसिक मैथ्स को थोड़ा सा हमने इम्प्रूव करने के लिए, जहाँ पे स्टूडेंट्स जनरली मिस्टेक करते हैं, बच्चे अक्सर गलतियाँ करते हैं. अब आगे जो है मैं शुरू करने वाला हूँ 9th क्लास की जो रेगुलर जो आपके टॉपिक्स हैं, जो रेगुलर आपके चैप्टर्स हैं, वो मैं शुरू करूँगा. आई विल फॉलो द CBSE जो NCERT की जो बुक है उसको फॉलो करेंगे और बाकी एक्सरसाइज जो हम कहीं से भी कर सकते हैं. और इन बिटवीन अगर कोई दूसरे बोर्ड का या कोई दूसरे कोई आपका टॉपिक होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके कह सकते हैं कि ये भी हमें करवाइए. सो पैरेलली मैं 9th क्लास और 11th क्लास दोनों की पैरेलल वीडियोस सेपरेट प्लेलिस्ट में आपको शेयर करूँगा. सो थैंक यू वेरी मच.